My lords, metric 7.1, Lord. I am in 7.1. हाँ 7 में कौन है? 7 में सीनियर काउंसिल मिस्टर शर्मा है। कहाँ लेने जाना है उनको? I'm praying for a week's adjournment. नहीं मैडम, ये सब नहीं होता। पहले आपके केस, आपकी तबीयत खराब थी, एडजॉर्न कर दिया हमने 2 हफ्ते 4 हफ्ते, अब नहीं। अभी आपको ये बोल रहा कोर्ट नहीं आए क्या आज? वो इज ही स्टिल इन हॉस्पिटल? No, Your Lordship, he's on the way. He's traveled today itself. He's like. नो, दैट इज नॉट अ ग्राउंड। चलिए 7.1 से शुरू करते हैं, जो होगा वही इसमें भी हो जाएगा। 7.1. यस जी। My lord, at the outset, I would submit that these petitions are contract employees. हाँ Now, this advertisement may be seen, my lord, by which you were offered appointment P1, P1 page 27. So, in 7.1, the post involved is, my lord, office assistant, class 3. 7.1 sir. हाँ 7.1 का पेज नंबर P1, page 27. पेज 27 सीरियल नंबर 5 5 में, sir. ऑफिस असिस्टेंट। This is the post involved in this case. जी। And in the last column, it says, my lord, that they will be paid a fixed remuneration of 11,000 per month with 5% increase every year. जी। Now, your lordships will see, my lord, the contract of service which was then executed, P3. P3. This is a standard contract, it's not disputed. This was executed between the parties, my lord. P3, first page of this P3, my lord, condition number 3. जी। नियोजन प्रस्ताव में उल्लेखित शर्तों के अनुसार निर्धारित अनुबंधित अवधि पूर्ण होने पर संविदा स्वतः समाप्त हो जाएगी। तथापि कंपनी को आवश्यकता होने पर संविदा के तहत नियोजित कर्मी का कार्य प्रदर्शन उत्तम होने पर संविदा अवधि केवल एक बार के लिए, जो कि अधिकतम 3 वर्ष के होगी, बढ़ाई जा सकेगी। Now, my lord, they have been repeatedly and consistently extended this contract even beyond 3 years, and every time there has been an extension. So they have not followed this, my lord, and though they say स्टॉपर लग जाएगा क्या? ये हमसे हर बार एक नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करवाते हैं टू पुट अ स्टैंड दैट इट्स अ नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट एक्चुअली इट्स एन एक्सटेंशन. आई विल डेमोंस्ट्रेट. ठीक है। इसमें नाउ the reason why these petitions are before lordships, my lord, that during the substances of contract they formulated a policy to govern the contractual employees. Earlier there was no fixed conditions or policies, my lord. They were offering the advertisement, then contract. Now they framed a policy. Right. This policy, my lord, lordships will see P8, 88. P8, yes. इसको देखेंगे सर. हाँ. ये पॉलिसी इन्होंने लागू कर दी अनुबंध तथा सेवा की शर्तों के नियम 2016, 30 जुलाई 2015 से प्रभावशील है. नाउ लॉर्डशिप्स विल सी पेज 90 पैरा 4.2. इसमें भी ये क्लॉज आ गया कि इसमें प्रति वर्ष ग्रेडिंग के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से कितना फिक्स रेम्यूनरेशन में एक्सटेंशन होगा. नाउ अंडर दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, माय लॉर्ड, काइंडली सी पेज 99. पे फिक्स किया गया कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज का, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि इनका कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी फिक्सेशन हो गया है. इसमें पेज 99 देखेंगे सर. इसमें तृतीय श्रेणी में 9 नंबर में कार्यालय सहायक ऑफिस असिस्टेंट को 15,000 पे ले आए. वो पहले 11,000 था, अब 15,000 किया. उसके बाद सर हमसे कॉन्ट्रैक्ट फिर से साइन कराया गया P9 पे. इसमें मैं स्ट्रेट अवे लॉर्डशिप्स को ले जाऊंगा अमाउंट जहां फिक्स किया गया है सर, डीए वगैरह सारे सब बढ़ा के, क्योंकि इस पॉलिसी के बाद फिर अल्टीमेटली जब ये साइन हुआ पेज नंबर 107 में सर क्लॉज नंबर 9 देखेंगे. तो इसी नई पॉलिसी के तहत फिर अब हमसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया और इसमें अब 20,270 पे हमको लाके फिक्स किया गया. तकलीफ है अपने को इससे सर. इसके बाद ये 2016 का नियम था. इन्होंने एक इम्प्यून्ड पॉलिसी 2018 में इशू करी, वो है सर P12. वी आर अगेंस्ट दिस. they say now we are amending this policy. अच्छा. And by way of amendment they have reduced our pay. How can they reduce your आप देखें ना सर इसमें क्या किया. ये पॉलिसी देखें P12 पे सर. P12 इसमें जो शेड्यूल लगा है परिशिष्ट 1, दिस योर लॉर्डशिप्स विल फाइंड पेज 143 है सर. 143 जी. बड़ी मेहनत कराते हैं आप. और इसमें सर 6 नंबर पे देखें कार्यालय सहायक श्रेणी 3, एंड इट्स मेकिंग अ रेफरेंस टू आवर ओरिजिनल ईयर ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट. तब कितना कर दिया आपका? अब 18,430 पे ले आए. और इस पर्टिकुलर डे पे जब ये पॉलिसी हमसे इन्फोर्स करा रहे हैं उस समय हम 21,000 पे पहुंच चुके हैं. और ये उसी का अमेंडमेंट है. इट्स अ रेफरेंस टू माय ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कि वो तब से आप 2013 से हैं.
इसमें इन्होंने कैटेगरी वाइज दे दिया कि आपका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कब एग्जीक्यूट हुआ है। हाँ हाँ 16 से लेकर 13, तो 13 में हमारा 18,430 पे लाया एंड दे फोर्स्ड मी टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने सर फाइल किया हुआ है, तो उसमें अब हमको ये 18,430 में ले आए। 960 में। हाँ, एंड आई हैव फाइल्ड अ कंपैरिजन शोइंग नोट P15। ठीक है, रुक जाइएगा, दिस इज द हाँ ठीक है, समझ गए। लॉस। Allowed initial engagement was 3 years, extendable up till 3 नहीं years. नहीं, ये इशू नहीं है। इशू ये है जी। कि जब आप P8 से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, थोड़ा नरेशन आपको हाँ। सीक्वेंस में बता दूंगा तो हाँ प्रॉब्लम। बताइए ना, बताइए। तो इनिशियल वाज 2013 में was for 3 years, which was extended up till 3 years, my lord. जी। तो 6 years के लिए था lordship. Up till 2018-19 तक इन लोग का चलता रहा, and the remuneration which was initially given continued, lordship. जी Now during the extension period, a new policy came 2018. जी, उसका clause 10 अगर आप देखेंगे your lordship. पढ़िएगा क्लॉज P12, my lord. P8 में क्या लिखा है? P12 है सर। P12 है सर। P12 क्लॉज 18 पेज नंबर, Clause 10 है सर। क्लॉज 10 पेज नंबर। Just a minute. That would be 140, your lordship. 141. 141 yes। हाँ इन नियमों के जारी होने, लागू प्रभावी होने से तिथि के पूर्व में कंपनी के अनुबंधित संविदा कर्मियों के लिए संशोधित नियम 2018 के चयन का विकल्प उपलब्ध रहेगा। संविदा कर्मी संशोधित नियम 18 के चयन का विकल्प अथवा वर्तमान अनुबंध की समाप्ति से संविदा नियम 2016 के अनुरूप परिश्रम प्राप्त करने का विकल्प इस नियम के परिशिष्ट के अनुसार चुन सकते हैं। जी। तदनुसार सेवा शर्तों में भी इन संविदा कर्मियों के लिए लागू रहेगा। यदि संविदा कर्मी द्वारा संविदा सेवा स्वयं का चयन किया जाता है तो उक्त स्थिति में उन्हें परिशिष्ट 4 के अनुसार वाचन पत्र भरना होगा, जिसमें उनकी नियमों का चयन समिति एवं वाचन के द्वारा नियम जारी होने के पूर्व की बताना क्या चाह रहे हैं आप इससे? बताना ये चाह रहा कि माने इनिशियल पीरियड नहीं, आप तो ये बता दीजिए जी। कि क्या कलेक्टर साहब ने मिनिमम वेजेस कम कर दी, जो कि आपने अचानक से जो है कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी कम We have कर दी? nothing to do with collector. It is our independent policy making. तो under which provision of law you could reduce the salary for the same work? Manoj, it is the new policy has come into आज effect. तक अगर आपको एमपीवी जो है 5,000 रुपए फीस दे रहा है प्रति केस और कल से बोल दे कि हम तो 2,000 रुपए देंगे, आप करेंगे मुकदमा? तो छोड़ दिए। नहीं, आपने तो छोड़ दिया क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं। उस कर्मचारी का सोचिए जिसका परिवार पल रहा है इसके ऊपर। Manoj, kindly consider this aspect. The initial engagement was. It is arbitrary. It is prima facie arbitrary. You cannot reduce it. Manoj, my submission is Manoj, the initial period was for a period of 3 years in the initial period plus 3 years. लेकिन फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा। You cannot replace a set of contractual No, employment. we are not replacing it. We are giving a new terms if it is applicable to them, because 2018 becomes a new term. Manoj. नहीं, it will not. I will hold that. Manoj, 2018 will be applicable for those who are for the first time engaged in the year 2018 and not those who are working since 2013. Because Manoj, in those there was a fixed period mentioned. आपने भी समझ तो लिया है अनूप जी, अब आपको ठीक है, बहस करना आपका कर्तव्य है। मैं आपको बस बता रहा हूँ क्योंकि सर 3 + 3 6 का वो टेन्योर था सर। नहीं, वो तो हो गया, उसके बाद आपने क्यों नहीं निकाल दिया इनको? 2019 में निकाल देते। They filled the form under 2018, Manoj. ठीक है, They opted for तो 2018. कोएर्शन है। I'm not, Manoj. We have taken 2018 that. they opted for. कोएर्शन। We have taken that plea. अरे आप नहीं भी लें तो भी कोएर्शन है। So they opted the 18th, Manoj. That is my चलिएगा। submission. एमपीवी के सारे घाटे की पूर्ति इन्हीं लोगों से करनी है। वो तो देखिएगा, this petition is filed. These petitions are filed being aggrieved of the action of the respondents Pay could not. in reducing the contract salary of the petitioners, full stop. Brief facts leading to the present filing of present cases are taken from WP 8953 of 2019 within bracket Ashish Chaudhary versus State of MP bracket close for the sake of convenience. Next, according to the petitioners, they were an advertisement was issued for recruitment in various cadres in Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited on 5/10/2012 annexure P1. Full stop. Post of office assistant within bracket class 3 post is mentioned at serial number 5. Full stop. According to the advertisement, in the first year, a contracted assistant, office assistant
class 3 was to be given a remuneration of rupees 11,000 per month with 5% increase every year. Full stop. There is a clause for renewing the contract on expiry of initial 3 years for one more term. That is, contract was to be valid for up to a period of 6 years, and after that contract was deemed to be terminated. Next paragraph. Thereafter, a service bond was filled, in which it is mentioned that the contract can be renewed for a further maximum period of 3 years. Next paragraph. Thereafter, wide annexure P8. Wide annexure P8. Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited brought into force Madhya Pradesh Power Transmission Company, contract services bracket में agreement and conditions of service bracket close rules 2016 as are contained in annexure P8 made effective from 30 July 2015. Next para. Petitioner's contention is that in terms of these rules, petitioner's remuneration was fixed at rupees 20,000. Amount बोलिए. My lord, 20,270. To 20,270. And petitioners were drawing the said remuneration when all of a sudden, by annexure P12, the Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited decided to change the to supersede the rules of 2016 and brought in force rules of 2018. Full stop. Petitioner's contention is that by bringing the rules of 2018, remuneration of the petitioner has been reduced. Next panel. The Shri Anup Nair, learned counsel for Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited, submits that since petitioners have agreed to the change in terms and conditions of the service and have signed the bond, therefore they have no they cannot raise any bone of contention before the High Court. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, the moot question which is involved in these three petitions is that whether the service conditions can be changed unilaterally and that too from a retrospective date or not. Next paragraph. As far as capacity or capability of Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited to supersede the rules of 2016 and frame rules of 2018 is concerned, that remains unchallenged. Full stop. However, it is true that those who were already working under the 2016 rules, their service conditions cannot be altered retrospectively by bringing into vogue rules of 2018, because rules of 2018 will have only prospective application and no retrospective application. Full stop. जी. जब तक इनका कॉन्ट्रैक्ट 19 तक चलता रहा, they were governed by ठीक है, देखिएगा. At this stage, Shri Anup Nair submits that under the earlier contract, which was executed under the rules of 2016, petitioners were paid their remuneration as per the clauses contained in 2016 rules, but later on it was changed. Full stop. Next paragraph. It is settled principle of law that one set of contractual employees cannot be replaced with another set of contractual employees. Therefore, unless Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited undertakes regular recruitment, they cannot replace petitioners with another set of contractual employees. Full stop. Thus, contractual employees who are appointed after coming into force of the rules of 2018 may be governed by the terms and conditions of the rules of 2018, but rules of 2018 cannot be made applicable to those who were already in the contractual service of Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited, and their terms and conditions
are required to, and terms and conditions of service, at least in regard to financial remuneration, shall continue to be the one which were decided under 2016 rules and cannot be changed to their disadvantage unilaterally. Therefore, act of the respondents in changing the terms and conditions of the employment, especially in regard to payment of contractual salary in a unilateral manner, cannot be given seal of approval. Same is hereby quashed. Petitions are allowed and disposed of. It is directed that respondents shall continue to pay salary to those, contractual salary to those who were engaged as part of the rules of 2016, and that remuneration shall not be varied to their disadvantage after coming into force of the rules of 2018. Full stop. Not that plea that they have forced us to sign a new contract. इससे क्या हो गया? आपको आम खाना है, गुठली गिनना है? My apologies. लेटर ऑन करके इनका नाम डाल दीजिएगा, श्री मनोज शर्मा. आपका Sir, स्वास्थ्य इसमें- ठीक है अब आप? I'm better. I've come back to this morning. Look, I am in 7 and 7.2. हाँ, दोनों में नाम डाल देंगे.